Good morning, friends. My formal Facebook friends and friends outside Facebook, students, teachers, parents, and everybody who would like to save himself or herself from natural disasters. By natural, I mean geological disasters. I'm not dealing with biological disasters, which are actually dominating the scene today. Idea of this interaction is to focus on school safety. What is the focus for school safety is same as the focus for uh, any school, maybe be it university or a college or even an ordinary home. Whatever the focus is to reduce or eliminate damage by natural disasters. Most of the natural disasters uh, are predictable, but for quakes. Often the question is asked, आपको मालूम है भूचाल कब आएगा? हम कहते हैं हमें ये नहीं मालूम कब आएगा, पर हमें ये मालूम आएगा. और फिर पूछते हैं भूचाल क्यों आता है? हम जियोलॉजिस्ट लोग हैं, हम कहते हैं भूचाल क्यों ना आए भाई. आपको हिमालय तो बड़ा अच्छा लगता है. The entire Himalayan mountain chain, the youngest, the most dynamic, and the highest mountain chain of the world, is actually born through an ongoing process of mountain building, which is a seismic process. The science of quakes is seismology. It's a very deep-rooted science, but no rocket science. Everybody can understand that every day almost there are so many quakes around the world. We have been having so frequent earthquakes in our national capital region, and there was a time when we geologists did some loud thinking, suggesting to Prime Minister Modi ji कि आप सर जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं कहीं नागपुर के साउथ में बनाइए, थोड़ी सी कैपिटल को स्कैटर करिए, एयर पोल्यूशन भी कम होगा, सेफ भी रहेगा. But that's not the issue. Issue is that earthquakes have been coming, these will come, and we must manage to make sure that this little one in my title slide from Nepal with so many bruises and dried up blood, there should be none like him. When I talk about saving the kids from disasters, at my mind are the little ones who are across my family and my students' families and across everybody around us, the friends, that there should be no little one hurt in a quake. It's our duty to protect these little ones, but also to make everyone a little conscious as to क्या करना है भूचाल आ जाए. और भूचाल के बाद में अगर आप किसी कोस्टल एरिया में हैं या by chance visiting a coastal area, if it's a big quake, expect a tsunami to come, like the Asian tsunami we had in 2004 and recently the deadly Japanese tsunami. When the whole water column of the ocean is pushed up and when it breaks at the seashore, there it comes with a vengeance, going up to a certain height. And that height is the small height, which I'll tell later. How do you run away, run higher, and escape being hurt in a tsunami? Quake, you can't perhaps at times manage. You cannot escape a quake,
but you can possibly intelligently, with the help of science and technology, rather science awareness, escape. At times, totally escape. And there are other disasters which are my focus, are flash floods, which are quite frequent these days, and Uttarakashi, that famous disaster which we had at midnight, where over 6,000 died, and every year we are having dead bodies coming out. That was a disaster which was entirely preventable. Uh, Disaster was coming, but the deaths were preventable, and perhaps the way we warned was not the right way. We should have been more proactive in warning. I have that at that point of time I was in Pennsylvania with my daughter, and a few days later we noticed that on her phone she was having live messages that the expressway on which she was driving was going to get flash floods, and it if had we done that sort of practice in our country, bombarding all the mobiles with these messages, especially in Uttarkashi area, perhaps we could have. But the messages were given, people didn't take them seriously because of lack of awareness, lack of preparatory awareness. The idea of today's interaction is to initiate a public awareness, a public mass communication, and a public interaction, discussion, and a ever ready mindset to preempt and save school kids, school teachers, school staff, families, and everybody else from the natural disasters I named. And normal floods too, after every rain or cloudburst, create havoc, and these are also predicted. Warnings are issued, but sometimes ignored, sometimes taken cognizant, and the other disasters like cyclones. Nowadays, we do have cyclones. One natural uh, disaster which is quite exciting for geologists. I say exciting, and I say this that unfortunately um, we don't have any active volcano in the Indian mainland. One small active volcano is far away uh, in the barren island, Andaman, which also is not active the way we have the Indonesian volcanoes, the Japanese, the Philippines, the Hawaii volcanoes. So many volcanoes across the world you have. So we miss out in our country the volcanic disasters, but the rest of three or four which are named, we talk about preparation. Here we have an overview of the Indian subcontinent where you have bigger dots, more dots, the density you see. All this territory, here the plates had collided, and all this territory is full of, this is the place, entire Himalayan stretch. In fact, we geologists often say this, that for many hundreds of years, we didn't have a very big quake in Himalayas. Even the famous Kangra quake, which happened over 100 years, 110 or 16 years, 116 years, was not big enough. But examples from that quake can be cited that Lord Curzon's wife was sleeping on a bed on which the chandelier, a huge heavy chandelier, fell down, and she had a narrow escape. She didn't get hurt at all. I'm talking about it so that the first lesson in saving the little ones and elders too, especially the seniors who cannot be very fast in reacting,
is to make sure that what can fall down must not be put at that place from where it can fall down. If you cannot remove it, sometimes a huge television can fall down. Even the almirahs may be unstable, and these may fall down. We are often in the habit of putting some loose materials on the top of the almirahs. These can fall down, and so in general, where you when you have a little one in your home too, uh, especially the grandparents like me, we keep on telling our kids, uh, take care, this can fall down on my grandson Kabir, and often the young parents laugh it away. But fact is, what can fall down must not fall down and must not be put at a place where it can hurt. Here is a question which is often asked. This is a magazine which gives out so many popular articles. This is, in a nutshell, what causes quakes. Uh, the mandate of my interaction today is not to discuss the science of quakes, but preventive um, action plan for saving people from this sort of situation where you have your highway split up as if it is जैसे हमारा वो पापड़ होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं वो एक्चुअली the crust has spread out. And these are actually Vigyan Prasar, the Science Communication Council of Government of India, the Department of Science and Technology, had released these posters way back in 2007-8 to celebrate the International Year of Planet Earth, which was a global uh, festival, triennium, 3-year festival, uh, initiated through a resolution in the General Assembly of UN. So these are examples where we, in these posters, atmospheric hazards and the geological hazards are talked about. Discuss the atmospheric hazards, the flash floods through melting glaciers. Rest of these cyclones and etc. etc. These are not my issue today. I'm only focused on earthquakes, landslides, tsunami, floods. Volcanoes, uh, especially in the Indian context, as I said, we have almost the total geological spectrum of the world in this beautiful landscape. Uh, but for we missed out the volcanoes. Not that we missed out in our past history. 65 million years back, we had the world's second biggest volcanic eruption, which carried on for thousands of years, and the pile of the volcanic flows is around 5 kilometers thick, and that's what wiped out the dinosaurs at that point of time. But today, we are a little poor on the volcanic scene. We have got to walk over to Indonesia or to Philippines and or track to Japan or take a flight to Hawaii. So the question, which is our mood question today, what to do during and after earthquake? I had clicked lots of pictures. In fact, I always do after every quake uh, or tsunami with my mobile phone, and idea is to put the latest information. These I clicked during the after the Nepal quake. I remember I was driving when the Nepal quake struck, and I didn't feel the quake, but I stopped when my kids called from Ghaziabad. They felt the quake,
And by chance, I was going to a school, Guru Tegh Bahadur School, um, on invitation of Professor Paramjit Singh, to talk on quakes. And I told them that I didn't feel it, but all the kids had felt it quake. Uh, so, what do you do during the quake? They say keep calm and reassure others. Easier said than done. In a quake, you don't have much time to reassure others. You can do it later, but if you have the awareness which we're talking about today, you may realize that it is in your enlightened self interest to keep calm and move to a corner, safe corner, or a good cavity like under a dining table. Um, the school kids could move under the little ones could move under their wooden desks or under the teacher's table, unless um, they are the modern ones with the fragile board type of tables. In fact, uh, the trend today to have these lighter furniture is very much anti-quake. It's not disaster friendly. Fortunately, I have a very good dining table under which uh, you could, two or three people, four people could quickly take refuge. And but the better planning in very enlightened countries, uh, you have enough water, some necessary medicines, first aid stuff, etc. in all places, which could become your refuge in the few seconds you get to escape from a quake. So safest place are the open spaces away from building. Fortunately, our village schools, though they are uh, disadvantageously placed in all other things, at times they don't even have a blackboard, but the easiest for them to run to uh, safer open spaces. And if you're indoors and you no chance to run out, take cover, as I said, under a table or a bed or against a wall, or sit down, putting your knees close to your chest and back to the wall. And if you go to a corner, better, because such places are the least likely to crumble. And if you have something to save your head quickly, maybe a pillow, maybe a helmet. Idea is to minimize the damage to your body. You cannot totally prevent damage in a big quake, and you may be locked up in debris of the building where you live, and you will depend upon the army or the dog squads. I remember there were some French team brought some dogs a week later. They got a guy who was in the debris. So our dogs had not succeeded. So preparation for rescue uh, should go side by side. The first preparation is in our mindset. Be fearless, but be smart to protect yourself. And the time is so short, 10 seconds, 20 seconds, or a minute, where you may not be able to save your friends or your classmates or your family at home. Everybody should be trained enough to help himself or herself. Now, too many glass doors, as I said, the glass top tables are a no no, and too many glass doors, glass panes, windows, outside doors, too many, not good for a quake to happen with this sort of thing. So, if you're making a new uh, home, be careful, have good sturdy wooden furniture, have least glass, and the glass should not crumble. I remember when we had
a quake in the 90s. I think it was also Uttarkashi. Our Punjab University had nearly 90% window panes cracked up, and we had two professors. One professor, Ashok Sani, had very tastefully collected lots of crystals and put them vertically over his television. All of those tumbled down and cracked up, and late Professor Bikidas had put his television on an old table whose leg broke up and the TV was gone. So never put your precious things in a precarious condition. Quakes don't come every day, but when these come, they can cause huge, huge damage. So not running around in panic because you don't have time. Don't rush to go out of the building because large number of people running through the same stairs, especially you are not advised to use lift, can cause stampede. You may not die in the quake, but you may die in stampede. भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर जाएंगे, तो इसलिए शांति से बैठिए जहां पे हैं। सिर्फ जो जुगाड़ मैंने आपको बोली, इस सबसे जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जुगाड़ है कि आप टेबल के नीचे घुसे। अनफॉर्चुनेटली दीज डेज आवर बेड्स आल्सो इन इंडिया वी हैव बेड्स व्हिच आर box beds. We have lots of useless stuff stacked in these box beds, but these prevent us from getting to safe corners, which are least likely to crack up. And it could have given us enough space, enough oxygen, and enough security. So in future, if you make new beds, at least you have a couple of beds with space below. So moving away from building, but when you're moving away, be careful. You are not below these electric wires. घर से तो निकल लिए और पता लगा कि खंबा गिर गया और बिजली की तार वहां पे फंस गए। एंड एक बार भूचाल आया है तो वो दोबारा आ सकता है। भूचाल से पहले शॉक्स आते हैं, भूचाल के बाद में भी आते हैं थोड़े थोड़े अरसे पे। तो जब तक चीज़ें सेटल ना हो जाएं, थोड़ा सा आराम करिए, बाहर में ताज़ी हवा खाइए और बी केयरफुल। भूचाल के बाद में अक्सर घर में आग लग जाती है। मुझे याद है जो कश्मीर का भूचाल था 2005 का या 6 का, उसमें पाकिस्तान में काफ़ी आग लग गई थी और कई लोग आग से मरे थे। तो अगर आपको टाइम रहे तो फटाफट गैस को ऑफ कीजिए। कोई हीटर जल रहा हो तो उसको ऑफ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद में। अब भूचाल के बाद बहुत कुछ होता है, अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स किल मोर देन, so listen to no rumors, but be careful. Your TV may be gone. Always have a good working small radio. Only source of information at times after a quake may be a radio. So if you have a little stock of drinking water, food stuff and first aid equipment, especially अगर हमने टेबल के नीचे घुसना है तो वहीं पे कुछ होना चाहिए ऐसा where we can have access to it. At times you should be prepared to be locked up in the debris of your building for a few days, or as I said, even a week. So it may not happen that you found a refuge, but you died because you had some essential medicines which were not. In fact, ideally such medicine should be in your pocket, and you should always have a bottle of water handy, so that if you run for getting safe yourself, you have your medicine, you have something to eat wherever. It should be accessible to you. It's also better said than done, because quake may take many years to come, and it may set in psychological fatigue. You have to refurbish those stocks, recycle them to have fresh medicines, fresh food, fresh water. But traditionally earthquake-prone countries like Japan don't tire with it. In fact, the best standards
in earthquake fighting are Japanese. They even had a small wall around to prevent the tsunami from crossing over. That day in 2011, I think it was 11, they were not lucky. The tsunami crossed over and it caused दहशत थी. देखा नहीं जाता था वो, जैसे आप कार में बैठे हैं और सुनामी आपको ले गई. सो टर्न ऑन योर ट्रांजिस्टर एंड उसी पे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो आपकी जान बचा सकती है. ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी मौत का अंतर दे सकती हैं, आपकी जान बचा सकती हैं. सो आफ्टर शॉक्स जो मेजर क्वेक के बाद में आएंगे, वो भी कभी कभी मेजर में आप बच गए और इनमें मर गए या बहुत घायल हो गए तो वो ट्रेजेडी होगी. और जैसा मैंने कहा, अगर भूचाल में शायद ना आप बंद कर पाए अपना किचन का स्टोव, पर कम से कम इसको आप इमीडिएटली आफ्टर द क्वेक हैज मोर और लेस स्टॉप्ड उसको बंद रखिए और वो बंद ही रखिए. और इलेक्ट्रिक स्विचेस और अप्लायंसेस, ये गैस लीक हो सकती है तो प्लीज बी केयरफुल, किसी स्विच को ऑन ना करिए. पानी की पाइप्स, बिजली की तारें, फिटिंग्स ये डैमेज हो जाएं तो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं. यू गॉट टू वॉच आउट. बट there are some more things to do, yeah, in a quake only. Sometimes cartoons tell more than any big lecture. I remember when we had the Asian tsunami, most of us in India had not heard about the tsunami. But there were students of 10th class out on uh, some visit who were who had read about tsunami in their lessons and who saved some 200 guys on a beach, because when the sea is going back, people think it's fun. Something there is happening, never before. So you have very fresh fish dead to catch, and that's your biggest undoing if you do that. But unfortunately, in India, we were not aware that in the last 200 250 years, we had around 5 tsunamis in the Arabian Sea and 5 in the Bay of Bengal. And this slide, this information was available to all of us, but um, we, our leaders were caught napping. They gave the plea that tsunami was not on our horizon, and we geologists, we did speak our mind out that we are not lay persons. We do rocket science, and we have the third oldest geological survey of the world. We have huge um, seismological labs. So no warnings came from all these areas. In fact, unfortunately, our saviors, our soldiers died in Andaman because they had no warning. And our communication system totally failed that day. But only thing which had to be done, which was not done, which should be done in future, after an earthquake, a tsunami may follow. A tsunami travels more or less with the speed of an aircraft. So it gives you enough reaction time from half an hour. It took about half an hour to reach Sumatra that time in the Asian tsunami, about 1.5 hours to reach Andaman, and about 2 hours or 2.5 hours to reach South India. So we had enough time, but at that point of time, all reaction time was lost. Unfortunately, in Japan, it was so close, they had no reaction time and huge damage happened. So tsunami we can take care of if we understand. If it's a huge quake, well, my friends here in Chandigarh and around in the Himalayas and Indian plains may say, why talk about tsunami? This is we are safe, or we are away from the coastal areas. Please remember, you always go on a holiday. There were people in Thailand on holiday. There were people in Sri Lanka on a holiday.
This region had only 11 countries, 12. This the Arabian Indian Ocean region, and about 300,000 of some 52 countries of the world died that day. So never ignore any disaster saving information and science understanding, thinking that we are safe. We are never safe because your school could be traveling to a flash flood area. A school could be on a tour to a coastal area, and a school could be from the deep down south safe portion of India, or to a tour in the Kinnaur, maybe Leh, where big quakes. In fact, we uh, have our entire northern India is in zone 4 or 5. So there is no place which is safe, and geologists have to be believed that forewarning means forearming. Nepal disaster should prompt Indian cities to review their dangerous construction trends. We actually construct with minimal scientific um, understanding or guidance. And as a geologist, I'm sorry to say, we have nothing like a geological safety certificate for a building. Why buildings or ordinary houses? We have a huge expressway coming up from Parmanu to Solan, where for 8 years we have hundreds of crores is lost, and every day you have on a new road a more landslide than we had on the ancient heritage Simla road. We have a tendency, I must honestly say that we are a geologically illiterate country. So in such a situation, geology teachers and practicing geologists have a big responsibility to, through this outreach, create awareness, create uh, an informal understanding, create a mindset, the geological mindset, which is independent of age, independent of literacy level of the persons. थोड़ा सा समझा होगा तो जान बचाने के लिए काफ़ी है. ये शुरुआत हो जाए तो बाकी का हम देख लेंगे. मुझे याद है हमारे कोई मंत्री जी थे, उनसे पूछा गया था कि आपकी कितनी तैयारी है. नेपाल के क्वेक के बाद पूछा गया था. अक्सर पूछा ही जाएगा, पार्लियामेंट में तो सवाल पूछने के लिए होती है पार्लियामेंट. तो मंत्री जी बोले कि नहीं, हमारी तैयारी नहीं है. नेपाल और भारत के बीच में एक सीमा है, वो सीमा तो इंसान ने बनाई. भगवान ने तो एक पूरा सब कॉन्टिनेंट दिया था. और मुझे याद है बनारस में कुछ लोग मरे थे, और बिहार में मरे थे, और कुछ तो एक आध तो दहशत से मर गए थे. तो ये कहना कि हमारी सिटीज़ में नहीं है, हम नेपाल में जाके मदद करेंगे पर अपनी मदद नहीं करेंगे, और वो एक दिन का 2-3 हफ्ते का हाहाकार था, उसके बाद में हम वहीं हैं जहाँ थे. हमें एक आदत डालनी चाहिए कि जब घर बने तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मटेरियल अच्छा है, स्टील अच्छा है, नकली तो नहीं लगा, ठेकेदार बना रहा तब भी, हम खुद बना रहे हैं तब भी, कोई सोसाइटी बना रही तब भी, और सरकार बना रही तब भी. स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे अपना घर हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे कोई होटल की बिल्डिंग हो, कुछ भी बन रहा हो, बिकॉज ले दे के जान खतरे में पड़ जाती है घटिया कंस्ट्रक्शन से. तो इस बातचीत के माध्यम से मैं पूरे समाज को, सरकार को और मीडिया को ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है. ये मैंने कुछ अपने बहुत ही पुराने अखबारों की यही क्लिपिंग्स से बातचीत कर रहा हूँ कि फोर वार्निंग इज फोर आर्मिंग. बट ये सर्विस जो होती है हफ्ता महीने भर की, उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर अगले भूचाल की इंतजार करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि तकरीबन 5 करोड़ लोग हिमालयन अर्थक्वेक्स में खतरे में पड़ सकते हैं. और हिमालय में भूचाल ना आए बड़ा वो हो नहीं सकता.
डैम बनाते हैं तो बहुत हम इंतजाम कर लेते हैं, भाखड़ा डैम का हमें पक्का है कि इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। पर शिमला में जो हमने गगनचुंबी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, पूरा एंशियंट आर्किटेक्चरल विजडम को छोड़ के, या बड़ोग में भी हमने बिल्कुल पेंसिल नुमा होटल खड़े कर दिए, बड़ोग हाइट्स और क्या क्या। और हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था कि यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग नहीं बनेगी। मैं शिमला गया तो मैंने देखा हाई कोर्ट की तो अपनी बिल्डिंग भी काफ़ी ऊंची थी। तो मेरे ख्याल से जो सुंदर हमारा हिमालय है, इसमें हम थोड़ा सा लेटरली स्प्रेड करें, वर्टिकली ऊपर ना जाएं, और भारी भरकम पिलर्स ना बनाएं, कंक्रीट के जंगल ना खड़े करें, और हरे हरे हल्के फुल्के घर बनाएं, जापान वाली सभ्यता से सेफ रहें। और सेफ्टी सेव्स, नॉलेज सेव्स। आज की जो बातचीत है, थोड़ी सी दहशत अगर इससे हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा डर जाएं और थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, और भगवान कभी ना आपको कोई नुकसान या आपकी ज़िंदगी को या आपके परिजनों की ज़िंदगी को खतरे में डाले किसी भूचाल में। ये पूरा का पूरा एरिया आपके सामने है। ये सारे में आप देखिए, ये एक एक जोन है जहाँ पे अगर कहीं पे भूचाल नहीं आया कई दिनों से, तो वो आएगा, जरा इंतजाम रखिएगा। ये जहाँ पे वो कहते हैं ना, किसी को गुस्सा नहीं आया तो किसी दिन आएगा तो बहुत भयंकर आएगा। अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में ये कहा जाता है। तो ये गुस्सा धरती माँ का, और ये हिमालय हमारा पूरा बिल्कुल भगवान है, इसको हम भगवान मानते हैं ना। हिमालय में ही हमारे सब देवता रहते थे। तो ये टूट जाता है, दिल टूट जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट भी थोड़ी सरक जाती है। बड़े बड़े पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नेपाल के भाषण दे रहे होते हैं और वो हिल जाते हैं बेचारे, पूरी पार्लियामेंट हिल जाती है। और इसके बाद में हम इसको भूल जाते हैं। चलिए, आई होप इस बातचीत के माध्यम से हम किसी सुनामी में न मरेंगे और किसी भूचाल में न मरेंगे। घायल होंगे तो थोड़े से घायल होंगे, कहीं अपने आप को बचा पाएंगे तो होपफुली दवाई अवेलेबल होगी, पानी होगा, खाने पीने को कुछ होगा। पर अब अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हों, गोविंद घाट जैसी जगह पे अनाउंसमेंट करे सरकार कि बहुत बड़ा वो आ रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो ऐसा ना करना कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो जाना है, हम तो बड़ी दूर से आए हैं, और पता लगा कि कहीं ना जा पाए। तो ये और वार्निंग सरकार से भी, ये आजकल जैसे फ़ोन पे एसएमएस और व्हाट्सएप सब कुछ चला रहता है, इसका कोई सिस्टम इतना बढ़िया होना चाहिए। जानलेवा जानकारी जरा तमीज़ से दीजिए, तरीके से दीजिए, सलीके से दीजिए, असरदार तरीके से दीजिए। जानकारी जान को बचाने वाली ना देने वाले को हम भूवैज्ञानिक कहते हैं, वो हत्या है। तो प्लीज़, ये जो बस्तियां बसती हैं जब किसी चैनल में, जहाँ नदियाँ बहने का भगवान ने रास्ता बनाया है, अगर आप वहाँ पे ये करेंगे, दुकानें घर बनाएंगे, मुंबई में भी बनाते हैं हम, उधर चेन्नई के पास तो हमने झीलों में प्लॉट काट के कॉलोनियाँ बना दी हैं, और हमने केदारनाथ के पास में भी यही हाल किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से कोई छोड़ा नहीं हमने, हर जगह पे ये सब कुछ। अगले फ्लैश फ्लड की इंतजार अगर हो रही हो तो गलत है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया था कि साहब इसका जरा देखिए, तो उन्होंने कहा हमें कुछ देखना नहीं है, हम आपको कई दशक पहले बता चुके थे कि हम एक साइट भी बता चुके थे, थोड़ा सा हाइट पे ये सब कुछ होना चाहिए। ये जो पवित्र स्थल है मंदिर का, इसके पास में गंदगी ना कीजिए, इसको सुंदर रखिए, पानी बहने की जगह है, पानी को बहने दीजिए। पानी पहाड़ के ऊपर तो बहेगा नहीं, पानी ने तो चैनल में बहना। तो बच्चों को ये समझा के रखना होगा हमें, स्कूल बनाने वालों को, स्कूल बिल्डर्स को, स्कूल की मैनेजमेंट्स को, हर जगह पे ये बता के रखना होगा कि भाई अपने स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी, और जो भी कुछ है आपकी प्रॉपर्टी, प्लीज़ किसी चैनल में ना बनाइए। जब पानी आ गया तो आपको उड़ा देगा, और वही हाल ना हो जाए, कहीं पता लगा कि 2 साल के बाद में हमारी लाश मिली किसी मलबे में, किसी फ्लैश फ्लड के। तो ये सबक हम
सीख के भूल जाते हैं। आज की बातचीत का मुद्दा ही ये है, भूल न जाना, क्योंकि भूल जाने के बाद में फिर भगवान फिर याद कराएगा, और ऐसा ना हो जाए कि शीशे की खिड़की खोलने लायक ना रहे। चले थे हम गोविंद घाट से आगे, और हेमकुंड साहब जाना था, बद्रीनाथ जाना था, वैली फ्लावर जाना था, और अंदर ही रह गए। तो स्कूल के बच्चे भी, मैं इसलिए स्कूल सेफ्टी के टाइम पे भी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हैं। और अगर बच्चों को मैंने समझा दिया, टीचर्स को समझा दिया आज, तो बच्चे जो हैं बड़े बड़ों को समझा देते हैं। बड़े ना समझ कई बार हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। तो बच्चों के माध्यम से ये जागरूकता, ये जानकारी दूर दूर तक जाए। तो हमारी ये बातचीत हमारे डॉक्टर अरुण बांसल ने ये आज अरेंज कराई थी। ये अब रही दूसरी बात, लैंडस्लाइड की। वो उधर भी जो हुआ था, उत्तरकाशी में हुआ था, बड़े भारी लैंडस्लाइड हुए थे। लैंडस्लाइड भूचाल के बाद में भी भयंकर होते हैं, और वैसे भी क्लाउड बर्स्ट में भी हो जाते हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड इतने एक्टिव होते हैं स्लोली, कि आम आदमी को उनकी डायमेंशन इतनी बड़ी होती है कि पता भी नहीं लगता। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये NRSA की रिपोर्ट है, जो मैंने जिसका कवर यहाँ रखा है, कि मुझे याद है, मैं एक दिन, मुझे आज तक ने टेलीफोन पे पूछा था मुझे दिमाग पे ही, कि ये कई जगह पे गांव दो फाड़ हो जा रहे हैं, अस्पताल की बिल्डिंग दो में फट गई, बिल्डिंग स्कूल की कट गई, और कईयों के घर कट गए। हमारे पंचकूला में भी ये हुआ था, एक सेक्टर बर्बाद हो गया था। तो उन पूछा इसका क्या इलाज है, तो कुछ 250 के करीब गांव बता रहे थे वो, उत्तराखंड के और हिमाचल वगैरह के, जिनमें ये हो रहा था, वो फट जा रहे थे, कट जा रहे थे। मुझे उधर कालिम्पोंग के आसपास में भी एक बार जाने का मौका मिला था लैंडस्लाइड के लिए। लैंडस्लाइड सिक्किम में तो हर रोज होता है, हर रोज 2-4 मर जाते हैं। तो लैंडस्लाइड किल्स, ये इसके बारे में कहा जा सकता है कि भूचाल तो थोड़ा आते आते आएगा, ये तो हर रोज आता है। तो इससे बचाना अपने आप को। अभी 2-3 दिन बाद में देहरादून में बड़े इंस्टीट्यूट में एक मीटिंग हो रही है, वेबिनार हो रहा है। तो ये जानकारी बहुत अहम है। आप कहीं पे ऐसी प्लॉट को ना खरीदिए जो दो फाड़ हो जा रहा हो, जहाँ पे लैंडस्लाइड बड़ा एक्टिव हो, सर्कुलर स्लिप फेलियर से खत्म हो जा रहा हो, जो कालिम्पोंग के पास हो रहा है, या फिर हमारे किन्नौर में जो हो रहा था। तो और बाकी लैंड ऊपर से जब स्लाइड करती है, आपका वो डाचा के पास में लाहौल में कितना बड़ा है, कोई तकरीबन 100 साल पहले हुआ था, पूरा का पूरा ऊपर से आया और पूरा गांव दब गया। उसके अंदर आज भी छोटे मोटे को पतीले वगैरह निकलते हैं। तो ये वाली जानकारी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाती है। एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट, मुझे याद है शिमला के पास में एक कोई बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे ओनर ने मुझसे पूछा कि कैसी है। मैं कहा 2 ब्लॉक तो आपके सही हैं, ये बीच वाला मुझे शक होता है कि लैंडस्लाइड पर खड़ा है। बोला कैसे पता लगा आपको? मैं कहा देखिए लैंडस्लाइड है, नीचे को क्रीप हो रहा है, वो जो पेड़ हॉकी बन जाए, वो जो ग्रो करते हैं वो तो वर्टिकली करेंगे, पर वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो ये कब टूटेगा भगवान जाने। तो उन्होंने, और प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत हूँ, पर मुझे डर है कि मैं शायद ठीक हूँ। और मुझे याद है मेरे से रिपोर्ट मांगी थी उस टाइम पे जो विद्वान वहाँ पे हेड थे, मैंने उनको भेजी थी। और उसी दिन बाई चांस मैंने इतना कहा था कि अगर हेवी रेन में ये भूचाल आया किस दिन, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उसी दिन शाम को सिक्किम का भूचाल आ गया। तो वहाँ भी हेवी रेन थी और भूचाल था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये ये करेला नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है, that 2 or 3 bad things, dangerous things, if they come together, bundled up, then it's a dynamic earth. Mountains are formed due to this dynamism, and continents, the plates are moving, they are having various relations with each other. But um, we were talking about a landslide and a flash flood. This example had become international news way back in 2000 midnight. We had a flash flood, and later, 5 years later, we had another flash flood in the Warichu, Spiti,
Satluj, etc. And the reason was it had got a landslide. The lake had piled up, and it caused huge damage. What had been damaged in 2000? It was July end or August beginning. 98 bridges had been damaged, and all the powerhouses up to Chava in Satluj Valley had been damaged in one night. And the villagers had been warned by their friends through STD. उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, and they were persuaded to move upslope because a huge flash flood was coming down. They did not believe it. 1.5 घंटे बाद they came back, and the news I read in the Tribune that a lady who was being swept away, she threw her infant into the arms of her husband a little higher up, and the lady was swept away. Oh, a huge number. I think 200 had died in that flash flood. So school kids, watch out, or schools which are situated as it is normal in the valleys, be careful, be a little higher than all the possible water flow channels. One day a huge flash flood can come. It may come in 5 years, it may come in 50 years, it may come in 500 years. But you should remember, in front of these active Himalayas, there are rivers which have spread out. All these floodplains tell you the limits of those rivers, and never stay in the river channel. It's meant for geologists to survey. Geologists like this hero, Sanjay Kumkarni, we popularly known as Kumbi. He risked his life and bread and everything to click this picture of this Parishu flood coming 5 years later at 3 o'clock, and he clicked it smashing, and he gave me these pictures. So 18 days he was moving around on this side with the camp on the other side, rations on the other side, and there were offers to airlift him, and he refused to go, leaving his staff. Such was the hero Sanjay Kumkarni, the geologist. But an example that where it has happened, it will happen again. So don't live too close to channel. If you are, watch out. Lake was swelling and lake was leaking out, and this was called a Himalayan tsunami. And in 2000 it happened, 2005 it happened, and this climate change is one reason, big reason, for the glaciers to be melting and giving out unmanageable these lakes which are dammed, and then dams break. It is Dr. Bhagu told me about such a lake in Bhutan, and this is normal in active mountains. This happens. So for more tips on the earthquake safety awareness, this site, earthquake country info routes. This is the U.S. Geological Survey site where students and teachers could approach. Just a quick list of what you need for emergency after the quake: fire extinguisher. आग लगी है तो बुझानी पड़ेगी. Adequate supplies of medications that you and your family members are taking, and some instruments to turn off gas and water supplies, first aid kit and handbook, flashlights and extra bulbs and batteries, portable radio, extra batteries mind you. पता लगा रेडियो है पर बैटरी नहीं है. Water for each family member of at least 2 weeks. Allow at least 1 gallon per person. And purification tablets of chlorine अगर वो पानी ठीक नहीं है, पीने लायक नहीं है. Canned and packaged food. You know, अपने यहाँ ये सब चौचले नहीं होते तो we can have at least चने और गुड़. इतना तो हो ही सकता है ना, खराब भी नहीं होगा. और थोड़ा थोड़ा करके राशन करके खा लेना. और कैंप, ये तो मुर्गे पकाने की बात कर रहे हैं अमेरिका. एनीवे, इसको छोड़े. And what should I do during the earthquake?
If you're indoors, this is more detail than what's given in the newspaper. Stay indoors, get under a desk or table or hang on to it, or move into a hallway or get against an inside wall. Stay clear of windows, fireplaces, and जो विदेश में खासतौर पे ठंड का टाइम है, आपने आग जला रखी है और भूचाल आ गया और लकड़ी का घर है तो सब कुछ स्वाहा स्वाहा हो जाएगा। तो ग्लास के कांच, हाँ खास तौर पे हमारे स्कूलों में क्योंकि मिड डे मील बनता है, भूचाल आया तो वो मिड डे मील जो भी बना था प्लीज डिस्कार्ड इट। उसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े गिर गए और बच्चे खा गए तो आफत आ जाएगी। थोड़ा सा पेरेंट्स बच्चों के बैग में कुछ थोड़ा सा ऐसा ड्राई राशन होना चाहिए, कभी डिजास्टर में फंस जाए बेचारे तो जी लें थोड़ी देर आराम से, कुछ खा पी लें। और पानी की बोतल उनके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और अगर आउटसाइड है तो जैसे कहा बिल्डिंग से दूर, कहीं ऐसा ना हो पार्क में गए और पड़ोस वाली सोसाइटी का टावर गिर गया आपके ऊपर में। और इफ यू ड्राइविंग बी केयरफुल बिकॉज यू कैन गो, योर कार कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। और जब ब्रिज गिर गया आपके ऊपर में या सड़क ही टूट गई जैसे मैंने आपको दिखाया था, एंड माउंटेनस एरिया है तो उसमें तो बड़ी बड़े रॉक के टुकड़े, लैंडस्लाइड, पेड़, पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर गिर सकता है। तो ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की साइट पे आपको हर भूचाल की दुनिया की जानकारी मिलती है। और घर टूटा तो बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको लगेगा नहीं 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 टूटता, नहीं नहीं ठीक है गुजारा, अगर टूट गया थोड़े क्रैक आ गए तो दोबारा ही बनेगा। एंड शेकिंग से बहुत कुछ हिल सकता है, फ्रिज गिर सकता है, छोटे बच्चे के ऊपर फ्रिज गिर सकता है और बड़ी बड़ी चीज़ें गिर सकती हैं, टेलीविज़न मैंने आपको, और पहले किताबों की अलमारियाँ गिर सकती हैं। और ये सब कुछ हो सके तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दीवार में वो किसी क्लैंप, उसको क्लैंप कीजिए सो दैट ये गिरे नहीं, चाहे वो अलमारी है, चाहे टेलीविज़न है, कोई भी भारी चीज़ है जो आपको ऊपर की हाइट पे रखनी है, उसको थोड़ा सा, आजकल के तो हमारे स्मार्ट टीवी सभी दीवार में हल्के भी हैं और दीवार के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो नहीं है। हमारे परिवार में ऐसी एक ट्रेजेडी हुई थी कि 29 इंच का फिलिप्स का टीवी एक छोटी बच्ची पे गिर गया था और बच्ची को एक कोना, फिलिप्स टीवी का कुछ नहीं हुआ था, बच्ची की जान चली गई थी। तो प्लीज़ याद रखिए, ये छोटे बच्चे ये सबसे बड़ी देन है, भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है, इनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। किसी भी भूचाल में, किसी भी फ्लैश फ्लड में, किसी भी सुनामी में ये आपकी जिम्मेदारी है कि जानकारी जो अच्छा, फिर आपको जूते बढ़िया डालने चाहिए। पता लगा उसमें से निकले बिल्डिंग से एंड कांच के टुकड़े और वो डेब्रीज आपके पाँव में घुस गए, हील व्हील कोई घुस गई और इंजरी है, आपके पास अपनी इंजरी का हिसाब किताब नहीं है करने को, तो लाइक दिस यू हैव सो मेनी डूज एंड डोंट्स। एंड चेकिंग फॉर हैजर्ड्स के ये सब कुछ हम पहले भी बोल चुके हैं। और फॉलन आइटम्स जो हैं इनको एक एक करके थोड़ा साइड पे टिकाना और अपनी जान को बचाना, ये बड़ी महंगी चीज़ है। अर्थक्वेक प्रूफ बेड हो चुका है डिज़ाइन, ये थोड़ा सा ट्रैम्बल हुआ तो ये जो पर्सन इस पे लेटा है वो अंदर चला जाएगा सेफ्टी में, और वहाँ पे यू हैव इनफ फूड, वाटर, बॉटल वाटर, फर्स्ट एड, गैस मास्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये महंगा है तो ऑब्वियसली हमें जो समझदारी से काम लेना कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ये अर्थक्वेक प्रूफ बेड तो अभी तो काफ़ी खाली चौंचले मात्र हैं, ये दुनिया भर का ताना बाना, ये प्लेट्स का ये एक दिखाने की बात है स्कूल के बच्चों को, अध्यापकों को और सभी मित्रों को कि यही है कारण, भूचाल जहाँ आते हैं और जहाँ नहीं आते हैं, जहाँ पे ये जंक्शन हैं वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे नहीं है। ये हमारा हिमालय बना ही ऐसे है कि इंडिया 5 सेंटीमीटर की स्पीड से हर साल नॉर्थ की तरफ तिब्बत के टकरा रहा, थोड़ा सा नीचे को जा रहा है और ये इधर उधर पुश हो रहा है। और ये जो माउंटेन चेन बना है ये दुनिया का सबसे अद्भुत, मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। बेटर वी मैनेज द डिजास्टर्स टुगेदर, these countries, if we manage the disasters together as friends, not foes. Let us enjoy these lovely lakes and not have petty fights there, because these mountains were made by God
a little earlier than we came to this planet. This is a gift. Let's enjoy the gift given by the Mother Nature. And the common tourism, common disaster management, common geological exploration. This is the idea I've been inculcating in all my audiences, and I like to talk to the whole global community. Please, like we declared Antarctica a research place, declare these Himalayan mountain chains in all these Himalayan ecology sharing countries as a heritage, a geo-heritage, a eco-heritage for the whole global community, and disarm all these countries. This beautiful area is not meant for um, this is meant for research. This is meant for enjoyment. This is meant for creating affluence of the communities which live here. If the alpine communities could be rich by shared ecotourism, geotourism, why the hell we should be a poor, wretched, downtrodden country which can be called filthy by somebody, and our air is filthy, or portions of our landscape may have filth because of uncontrolled throwing away, but our landscape is beautiful. It's very rich landscape. It's geologically rich. It's beautiful in all ways. This South Asia, the whole region belongs to the entire humanity. So let's value it. This is the most beautiful region of the world, but most prone to the most dangerous earthquakes, which cause these types of moments. These folds are just to illustrate what happens with the slow movements. थोड़ा थोड़ा करके ये होता है, और सारी exploration is based upon these structures, but uh, telecommunications and the media have a crucial role to play in disaster risk reduction. ISDR is International Strategy for Disaster Reduction. Phone systems, mobiles, television, radio, news services, and the internet are all examples of tools the media and telecommunications can contribute to risk awareness, education, and early warning. Today, what we're doing on Facebook Live is a huge step in this collective direction. Alerts can be communicated and broadcast to ensure that even the most vulnerable receive warning that could potentially save their life. Media systems help people visualize and learn about risks they face and about options for reducing the risk. Reducing the risk, minimizing the damage, that's the idea. But when tsunami came, it was a huge geoethical lapse for the scientific community of all advanced countries who did not warn in time. And I said that day in Hindustan Times in 2005, and I say it again. Those who hold the life-saving information are the killers. And those who think it's not our business, these are some poor countries in South Asia which are going to suffer, forget it. God has a poetic justice. 52 countries lost. So in future, the entire humanity, all the technical world, the technical elite should remember some dear ones may be in some corner suffering because of not sharing information. Sharing and caring is the idea of this disaster management interaction today. Last but not the least, Chandigarh has close to it the Mughal Garden. Through the Mughal Garden, if you go there, remember here passes the Pinjore Manimajara fault line. This is a fault plain which was active. Some colleagues in collaboration with Japanese researched on these. About 350 years, there was a huge quake which caused an uplift of nearly 2 meters or 3.5 meters. So watch out. You have many gadgets, but there is no substitute to intelligent observation and intelligent understanding. I'm not advocating geological education for all, I'm advocating geological understanding and vision for all. ये किसी कागज के टुकड़े की डिग्री की मोहताज नहीं होती, ये तो बातचीत से कोई भी सिखा सकता है, और यही है सारा खेल
हमारा, और अरुण बांसल जी ने ये कराया है, यंग फैकल्टी इन पंजाब यूनिवर्सिटी. I'm so glad he's helped me play my second innings. I'm already nearing 71, but God bless this great young boy, Arun. Arun, now we could be together. Yes, sir. It was a wonderful session, and I'm really glad and thankful for the same. And we have got certain questions from the audience. And the first question is, what are the man-made causes for earthquakes and landslides? आदमी जो है इतने सारे काम करता रहता है गलत मलत, तो कौन से कारणों से अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होते हैं? लैंडस्लाइड तो आदमी की करतूत से हो जाते हैं. भूचाल भी कभी कभी होते हैं. कोयना का जो डैम बना था, जो रिजर्वायर था, उसके लोड से ये जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है कि भूचाल ज्यादा आने लगे. तो भूचाल इतने ही कह सकते हैं. बाकी वो फ्रैकिंग पे जो शेल गैस का जो वो एक्सप्लोरेशन है अमेरिका में, उस दिन ट्रम्प साहब से ने उनको घेरा था, जो बाइडेन को, कि तुम फ्रैकिंग कराओगे कि नहीं कराओगे. तो वो भी एक जरिया है. ओहायो में आई एम टोल्ड quakes became more frequent. So there are some such causes which are not intentionally done by man, uh, but these happen to be coincidental with the uh, number of quakes rising. But otherwise, but landslide, कुदरत तो करती ही करती है. भूचाल आएगा तो बड़े धड़म धड़म लैंडस्लाइड हो सकते हैं और होते हैं. और अगर हम सड़क बनाएंगे, अच्छी खासी जहाँ बनी हुई थी, ये जो ये आई वुड यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, या पर्पसली आई वुड यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इज मेड बाय अ ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन and by foolish technocrats who were sullen headed, who did not care to consult a single geologist, and उन्होंने पूरी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया है. There were ideal ways of making it slightly more stable, slightly wider wherever it could be, and we could have had more tunnels and alternate one way, two way कर सकते थे. पर हिमालय में active हिमालय में expressways are a stupid thing to do. I'm told that this is also being done in Northeast. I appeal to the Prime Minister to intervene, because this is destabilizing the Himalayan highways for not for decades but for a few hundred years. This has triggered a landslide which are more every day happening, and that contractor is busy clearing the debris, again creating a wall so that landslides don't happen. But every other day when you have a heavy rain, it again comes. Landslides were not that frequent on this highway, on our highways. So this is the man-made, absolutely man-made sliding activity in the Himalayas, which is wasting land resources, and above uh, huge geoheritage precious rock exposures and fossil sites were destroyed, and it was done so recklessly. Geologists, they were not notified. They had no chance to make fresh collections. Whenever there is a new excavation, geologists like to see. So there were such road constructions are normal activity. In fact, geologists often love landslides because the landslides give you new exposures, new science, new data, and which may lead to new discoveries. So, as I said, we love volcanoes also. So we love landslides, no problem. But creating landslides by ignorance, वो भी चलता. Innocent ignorance I would excuse, but this arrogant ignorance, what's happening in Himachal from Parvanu to Solan, I request the Chief Minister of Himachal to stop it, because if this way this guy takes the road up to Shimla, Shimla will come tumbling down. It's already in a very fragile condition. अगर इस तरह से सड़क बनाई ना वो शिमला के आजू बाजू में, तो हिमाचल का इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हमने कभी सोचा नहीं था जो होगा. So my appeal through this Facebook interaction
that man-made landslides should be minimized. There is going to be huge wisdom in this discussion happening on 28th and 29th. Hopefully, I'll also interact there in the Wide Institute webinar, where the Indian and global experts will be talking. I'm a layperson in landslides. I'm only talking through common geological sense because I spent 10 years in Geological Survey of India and worked with some very big shots like Professor Owen Bhargava, Professor Vibhatia, Professor Tsunami in India and several abroad. But man-made landslides do happen, natural landslides do happen. Natural landslides can also be minimized through active management, through science and technology. Science and technology हर चीज का इलाज देती है. And our science is not a rocket science, but the most important science, which creates sustainability, safety, and national development. And unfortunately, our country has not focused well on geosciences. इसलिए ये लैंडस्लाइड और पूरे का पूरा जो भी हो रहा है ये बिना जियोलॉजिकल कंसल्टेशन के हो जाता है. ये होना नहीं चाहिए. चाइना में 100% स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जियोसाइंसेस पढ़ाई जाती हैं. हमारे यहाँ पे हार्डली 4 और 5% में. पूरे पंजाब में कहीं पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था. अभी बठिंडा में खुल गया छोटा सा. और तो और हिमाचल में, शिमला में, एचपीयू में जियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था. अभी खुला थोड़े साल पहले वो धर्मशाला में. What a country we are, where climate department is Met department is monitoring earthquakes. Well, कोई भी कर ले, but why the hell we have NGRI? Why the hell we have Geological Survey of India? Why the hell we have our institute? If a specialized arrangement, a topic is not to be dealt by specialists, तो फिर यही होता है दूसरा. जी, मैं आपकी बात से समझा हूँ कि आने वाले दिनों में ये टॉप और जोर पकड़ेगी और जो उम्मीद है कि भविष्य जो है इससे सुनहरा होगा और आगे और भी हम आपकी इनपुट के साथ कुछ ना कुछ निकलेगा. और अगला जो प्रश्न है हमारा ये है सीजन के साथ जुड़ा हुआ. इज देयर सम पर्टिकुलर सीजन रिस्पांसिबल लाइक आफ्टर हैवी रेनी सीजन और सडन क्लाइमेट चेंज फॉर दीस डिजास्टर्स? जितने भी डिजास्टर होते हैं तो सीजन के साथ भी कोई जुड़े हुए हैं या रेन के साथ, जैसे है कि मानसून के बाद या इस तरह कोई सीजन होती हैं जिसमें ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं? हैवी रेन के साथ तो जुड़े ही हुए हैं, नो क्वेश्चन, वो तो है ही है. और प्रॉब्लम सिर्फ ये है क्लाइमेट चेंज का जो पैटर्न है. हमारे जो रेन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड ओवर 2 months, 2.5 months, वो एक दिन में ही ढेर सारी बरस जाती है. तो सेकंड को यहाँ पे विराम लेने के लिए कहूँगा क्योंकि मेरा प्रश्न शायद ऑडियंस ना सुन पाए, तो एक बार प्रश्न आप दोहरा दीजिए ताकि उनको पता लगे कि आंसर आप किस चीज का. The question was whether earthquakes, whether the disasters are related to climate, seasonal change. Well, these are, but not the quakes, not the quakes. I know of कुछ लोग क्लाइमेट चेंज से क्वेक्स को भी थोड़ी लिंक के बारे में कुछ रिसर्च होती है जो मुझे समझ नहीं लगी. मैंने वो सुना है. मुझे देयर वाज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम वार्ड इंस्टीट्यूट, कोई एक्सपर्ट्स इस पर डिस्कशन कर रहे थे, बट आई वुड से वो अभी एकेडमिक डिस्कशन है. क्लाइमेट चेंज होने को तो हम मून की ग्रेविटी को भी अर्थक्वेक से लिंक करते हैं. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बिकॉज these are interconnected चीजों में कुछ चीजें हमें समझ लगती हैं, कुछ लग रही हैं, कुछ अभी नहीं लगी हैं. So this is a wide open topic, but heavy rain does create disasters. वो उत्तरकाशी वाला जो हमारा वो था डिजास्टर 2013 का, और जो अभी जो आजकल थंडर से बहुत लोग मरने लगे हैं, और अभी अपने उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उधर में तेलंगाना में, चेन्नई में जो हुआ, ये ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो है बारिश का ही तो हिसाब किताब है. मेरा ये कहना है अगर कहीं बड़ा भूचाल जो सिक्किम में आया था हैवी रेन के दौरान वो आता है तो लैंडस्लाइड्स की संख्या और उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. दैट्स समथिंग जिसमें कुछ शक ही नहीं है. बाकी चीज़ों पे तो एकेडमिक डिस्कशन होती रहेगी कि मून की ग्रेविटी क्या कर रही है और कूलिंग और वार्मिंग क्या कर रही है, ये सब कुछ तो होता रहेगा.
बट इनके साथ भी कई सारे और दूसरे डिजास्टर्स भी लिंक्ड हैं, बट ये वाला पक्का है कि बारिश चूंकि स्कैटर्ड नहीं है और ये एक पैटर्न है जो बन रहा है, पर इस पैटर्न को भी अभी हम जिसको बोलते हैं ना परम सत्य ना समझें कि ये ऐसा ही है, बिकॉज जियोलॉजिस्ट जो है अपनी एक जिंदगी में जो ऑब्जर्व करता है फिर उसकी आने वाली पीढ़ी भी ऑब्जर्व करती है और कई हजार सालों के बाद में कुछ कंक्लूजन पक्का निकलता है। अक्सर क्या होता है, हर सर्दी में हम बोलते हैं कि साहब आइसेज आ गई, और हर गर्मियों में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। ये वेदर एक्सट्रीम्स भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। मेरी उम्र 70 की है, 71 का होने वाला हूँ। मैंने पिछले 60 साल में तो कम से कम इसको समझा ही है पटियाला और चंडीगढ़ में। पर हमारी सड़कों का हमने भट्टा बिठा लिया है, स्पीड ब्रेकर इतने लगाए कि बच्चे क्या कारें डूब जाती हैं हमारे चंडीगढ़ जैसे शहर में, बाकियों को तो पूछिए नहीं आप। तो उसको भी बड़ा भारी डिजास्टर कहेंगे आप। तो हाल ये हो गया है कि बुजुर्ग लोग मेरे जैसे तो आसमान में बादल देख ले तो गाड़ी नहीं निकालते, क्योंकि चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में अगर लेक बन जाती है और कार स्टार्ट फ्लोटिंग अराउंड, पार्क कहीं करी थी और कहीं चली गई। तो थिंग्स हैव बिकम डिजास्टर्स, बट किधर जाएगा अभी पता नहीं। वी नीड टू मैनेज अवर ड्रेनेज बेटर, देन थिंग्स में भी बेटर। ये छोटी चीज है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो मैं इसीलिए कहीं पे मैंने फेसबुक पे आज लिखा है कि आई वांट टू मैनेज दिस डिजास्टर थिंग थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में है वो अक्सर सोए होते हैं और वो काफी जगाने पे भी नहीं जगते हैं। पिछले 8 साल में चिल्ला चिल्ली के बाद में भी सरकारें नहीं जगी और हिमालय की एक्सप्रेसवेज में जियोलॉजिकल हेरिटेज का बेड़ा गर्क हो रहा है, लैंडस्लाइड ट्रिगर हो रहे हैं और करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है। हाँ, अगला कोई सवाल? ये जो आपने आंसर दिया है सर कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग काफी सारा डिजास्टर बचा भी सकते हैं। तो आपके सेशन के अंत में आप कुछ बुलेट पॉइंट्स हमें लिस्ट करते हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी अपने आप को डिजास्टर से बचा सकता है सही प्लानिंग के जरिए, घर पे, स्कूल पे, अपने इंस्टीट्यूशन में। बस कुछ बुलेट पॉइंट लिस्ट कर दीजिए, फिर हम सेशन कुछ जो चीज गिर सकती है और दीवार में क्लैंप की जा सकती है, लाइक टेलीविजन पहले वाले मेज से गिर जाते थे, आजकल के तो दीवार में क्लैंप ही होते हैं। आपकी हैवी कबर्ड्स हैं या बुक शेल्फ हैं जो खड़े हैं, जो हिल सकते हैं किताबों से भरे हुए, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए चाहे स्कूल में चाहे घर पे तो बच्चा मर सकता है, छोटा बच्चा खासतौर पे इन्फेंट जो जमीन में ही खेल रहा होता है, दौड़ दौड़ कर रहा होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, कोई बच्चा उसमें उंगली डाल लेगा, कुछ करेगा, अक्सर पेरेंट्स उसको कांस्टेंट वॉच नहीं कर सकते। छोटे मोटे ये वाले हैं, बट लार्जली जो बिल्डिंग जब बनती है हम लोग ठेकेदार को दे के सो जाते हैं कि बस बन जाएगी, या कोई सोसाइटी की मैनेजमेंट है उनको दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब बन जाएगी। सरकार कुछ बना रही है, वजह बन रहा है। पब्लिक को इन सब में दखल देनी चाहिए और वॉच डॉग बनना चाहिए, बिकॉज यही बिल्डिंग आपकी कब्रिस्तान बन सकती हैं अगर इनमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा और बनाने वाले जरूरत से ज्यादा ईमानदार थे, मतलब बेईमान थे। तो ये वाली छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्डिंग earthquakes don't kill, dishonest builders kill, ये बड़ी फेमस कोट है। भूचाल किसी को मारता नहीं, घायल कर देता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइज जो इस्तेमाल है वो एक जिसको बोलते हैं हमारे सबके दुनिया भर के लोगों के सेल्फ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में है। इसी कारण से यूएनओ की जनरल असेंबली ने 3 साल का एक जियो साइंसेस का ग्लोबल फेस्टिवल किया था, जो हमारे डॉक्टर कलाम साहब ने लॉन्च किया था। मैं उसका हिस्सा था 3 साल। मैं उस वक्त अमेरिका में सिंसिनेटी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर था, सैबैटिकल के साथ में, मीडिया के साथ में। तो मैंने उसको देखा दुनिया भर में, वो बहुत अच्छे से हुआ था। हमारे यहाँ पे शुरू तो अच्छा हुआ था पर अभी तक पहुंचा नहीं।
अगर पहुंचा होता तो उसमें एक मैंडेट ये था दैट वी शुड क्रिएट मोर लिटरेट जियोलॉजिस्ट, फॉर्मली क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ बात ही नहीं अभी तक हो रही उसकी। कुछ साइंसेज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अच्छा है, उनकी भी बहुत ज़रूरत है, पर एनी country with a poor focus on geosciences and environmental sciences, I'm sorry to say environmental sciences पे भी हम चोंचलेबाजी ज़्यादा करते हैं, वो जो फॉर्मल फोकस है रिसर्च पे और जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा पुअर है। इन तो दोनों पे जिस दिन हम 100% फोकस करेंगे, अमेरिका की रीस ना करें, यूरोप की ना करें, चीन की तो कर लें। चीन हमारे मुकाबले में क्या था, हमने देखा है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब ये 62 में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, क्या औकात थी चीन की। आज चीन जो है टक्कर दे रहा पूरी दुनिया को, तो हम खड़े हो जाएं कम से कम चीन को जो साइंसेस अवेयरनेस में और जो साइंसेस एजुकेशन में, एनवायरमेंटल साइंसेस एजुकेशन में, इको टूरिज्म में, जियो टूरिज्म में चीन का मुकाबला करें ऑन वॉर फुटिंग। हम तभी अमीर हो पाएंगे। और थोड़ा सा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एफर्ट, जैसे मैंने कहा था, ग्लोबल हिमालय की रिसर्च पे हो, सो दैट यहाँ वॉर्स की जगह कॉमन शेयर्ड इको टूरिज्म, जो टूरिज्म हो और सभी अमीर हों। और ये आइडिया जो करवा लेगा उसको फॉर श्योर साइंस का भी और पीस का भी नोबेल प्राइज मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए, पर आई एम श्योर, दुआ करता हूँ अरुण बंसल और इसकी जनरेशन कभी नोबेल पीस प्राइज लेगी ऐसे आइडिया पे। मिला। जी 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 जी, आपका सर बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे लगता है कि सेशन हम लोग यही वाइंड अप कर सकते हैं। जी, आप क्योंकि लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे तो वाइंड अप सर आप ही को Yeah. करना हो। So friends, families, teachers, this was our beginning. And in coming weeks, we'll be talking on water, we'll be talking on what I said, ecotourism, geotourism, mineral exploration, all fields of geosciences and environmental sciences. Uh, Focus is to enjoy our life on this planet, create a great India, help our neighbors also to become a great Pakistan, a great Bangladesh, a great Bhutan, a great Nepal, and uh, be all of us be better and much richer than China and Europe and America. This is the target. बिना एजुकेशन के, बिना विल पावर के ये होता नहीं है। पर बिना जियो साइंसेस के, एनवायरमेंटल साइंसेस के कभी कोई देश अमीर नहीं होता है, सस्टेनेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, एफ्लुएंट नहीं होता है। यही है मेरे मन की बात एज अ जियोलॉजिस्ट। So that's enough for the day, and look forward to another interaction another day, someday. Thank you, Arun. Thank you, friends who joined it. God bless.